बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, जॉन कीट्स और रोमांटिक पोइट्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप रोमांटिसिज्म को यहाँ से थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिकॉज हमारे पास एग्जाम सर में और टाइम बहुत थोड़ा है। रोमांटिक पीरियड को देख लें कि रोमांटिक पीरियड इज अ टर्म अप्लाइड टू लिटरेचर ऑफ approximately the first third of 19th century. During this time, literature began to move in channels that were not entirely new but were in strong contrast to the standard literary practice of 18th century. How the word romantic came to be applied to this period is something of puzzle. Originally, the word was applied to the Latin or Roman dialects used in Roman provinces, especially France, and to the stories written in these dialects. Romantic is a derivative of romance. ठीक है, रोमांस से romantic निकला है, which was borrowed from French romance in 16th century. At first time it means only like the old romances. जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि बेटा जो romantic poetry है, पहले ये समझा जाता था कि जैसे ओल्ड रोमांसेस, जूलियट एंड सीजार की कहानी या फिर कोई लव स्टोरी, या इसी को रोमांसेस कहा जाता था, बट ग्रेजुअली इट बिगेन टू कैरी अ सर्टेन टेन। बाद में फिर इस पर डिफरेंट किस्म का फार्मूलाज और अप्लाई हुए, चेंजेस आए। रोमांटिक अकॉर्डिंग टू एल्पी स्मिथ इन हिज वर्ड एंड ईडियम connote false and fictitious beings and feelings without real existence in fact or in human nature. उसका ये कहना था कि रोमांटिसिज्म क्या होती है, फॉल्स और फिक्टिशियस क्या होती हैं, ये बीइंग्स होती हैं। यानी कि इंसान एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर जब चला जाता है जिसका रियल थॉट से, रियल वर्ल्ड से ताल्लुक नहीं होता, तो हम इसको जो है क्या कहते हैं, इसको फॉल्स और फिक्टिशियस बीइंग एंड फीलिंग्स कहते हैं। ठीक है, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम उसको कहते हैं कि हम अब रोमांटिक वर्ल्ड के अंदर चले गए हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर चले गए हैं। इट ऑल्सो सजेस्ट ओल्ड कैसल्स, माउंटेन एंड फॉरेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको जॉन कीट्स की पोइट्री के अंदर मिलेंगी। अब पेस्टोरल प्लेन्स है, वेस्ट एंड सॉलिटरी प्लेसेस, एंड द लव फॉर वाइल्ड नेचर फॉर माउंटेन्स एंड मोर्स। ठीक है, एक लव फॉर नेचर है। देखिए, वर्ड्सवर्थ को ना पोइट ऑफ नेचर कहा जाता था, क्योंकि उसके अंदर लव ऑफ नेचर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, वो माउंटेन्स के बारे में लेक्स, इवन उसको लेक पोइट भी कहा जाता था कि वो उसने लेक्स एंड रिवर्स के बारे में बहुत कुछ लिखा। ठीक है, उसकी ज़्यादातर पोइट्री लेक पोइट्री कहा जाता है कि उसने लेक के किनारे बैठ के, जहाँ पे वो लोग शिफ्ट हो गए थे, वो और उसकी बहन, वहाँ बैठ के उन्होंने एक कहानी लिखी थी। फिर जो है, द वर्ड passes from England to France and Germany late in 17th century and became a critical term for certain poets who scorned and rejected the models of past. They prided themselves on their freedom from 18th century poetic code. In Germany especially, the word was used in strong opposition to the term classical. और जर्मनी में especially जो word था वो was in strong opposition to the term classical. ठीक है, ये totally different था टर्म क्लासिकल से, क्योंकि द ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ सो कॉल्ड लेक पोइट्स, जिसमें वर्ड्सवर्थ थे, कॉलरिज और जाउदी, with Scott, Byron, Keats, and Shelley as romantic poets is late Victorian, apparently as late middle 1880s. And it should be noted that these poets did not recognize themselves as romantic, although they were familiar with the word and recognized that their practice differed from that of 18th century. And according to Rene Belleg in his essays, The Concept of Romanticism, Comparative Literature, Volume 1, the widespread application of the word romantic to these writers are probably owing to Alois Brendel's Coleridge and Die School actually in England, Coleridge and Romantic School in England, translated into English in 1887, and to Walter Pater's essays Romanticism in his appreciations in 1889. The reaction to standard literary practice and critical norms of 18th century occurred in many areas in varying degrees. ठीक है, अब with the passage of time ये सारी चीज़ें जो है romanticism की definition जो है वो change होती रही, specific areas, specific degrees. Reason no longer had the high place at a high it had held in 18th century. Place was taken by imagination, emotion, and individual sensibility. That is the main point.
बाद में क्या हुआ कि इसकी जो सारी जगह है वो कहाँ पे ले ली किसने, यानी कि पहले हम रोमांसेस से स्टार्ट हुए, फिर हम लेक रिवर्स, देन लेक पोएट्स, एंड देन एक इमेजिनरी वर्ल्ड। फिर इसके बाद जो है इस रोमांटिसिज्म का जो जॉन कीट्स का जो दौर था, उसमें रोमांटिसिज्म की जो डेफिनेशन थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। अगर आता था जॉन कीट्स एज अ रोमांटिक पोएट, तो आपने बताना है कि जॉन कीट्स से पहले की रोमांटिसिज्म क्या थी और अब की, लेकिन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, ये नहीं कि आप शुरू ही हो जाए रोमांटिसिज्म पे। तो आपने बताना है कि पहले इस तरह की रोमांटिसिज्म हुआ करती थी और अब इस तरह की। तो वो क्या थी? इमेजिनेशन एंड इमोशन एंड इंडिविजुअल सेंसिबिलिटी। द एक्सेंट्रिक एंड द सिंगुलर took the place of accepted conventions of the age. A concentration on individual and minute replaced the 18th century insistence on the universal and the general. Individualism replaced objective subject matter. ठीक है, अब जो है वो जो इंडिविजुअलिज्म थी उसने रिप्लेस किया उस सब्जेक्टिव मैटर को। प्रोबेबली एट नो अदर टाइम हैज द राइटर यूज्ड हिमसेल्फ एज अ सब्जेक्ट ऑफ हिज लिटरेरी वर्क्स टू सच एन एक्सटेंट एज ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड। अब क्या हुआ कि इंडिविजुअलिज्म ने रिप्लेस कर लिया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मैटर को। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म मीन के इंडिविजुअल की जो थॉट्स हैं, इंडिविजुअल की जो थॉट्स हैं वो अब आगे चली गई। पहले होता था एक सब्जेक्ट मैटर पे लिखा जाता था, लाइक खेल खलियान, वादी, उसकी खूबसूरती। लेकिन अब इंडिविजुअलिज्म ने ये सारी चीज़ें रिप्लेस कर ली कि एक इंडिविजुअल क्या सोचता है, उसकी इमेजिनेशन क्या है। ठीक है, तो वो जो है अब राइटर हिमसेल्फ, और फिर क्या हुआ, प्रोबेबली एट नो अदर टाइम has the writer used himself as the subject of his literary work to such an extent as during the romantic period. ठीक है, तो राइटर ने खुद अपने आप को एज अ सब्जेक्ट यूज करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि वो एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्ट मैटर को लेता, यानी कि दूर पर एक रिवर पे, लेक पे या किसी चीज़ के ऊपर, बल्कि अब राइटर खुद इन्वॉल्व हो गया। Writer tended to regard themselves as the most interesting subject for literary creation. Interest in urban life was replaced by an interest in nature. अब वो जो urban life का interest था वो change हुआ nature में, particularly in untamed nature and in solitude. ठीक है, एक untamed nature और जो है एक solitude, यानी कि एक अकेले में जो आपको एक तन्हाई का सफ़र जो इंसान का है। Classical literature quickly lost the esteem which poets like Pope have given it. The romantic writer turned back to their own native tradition. The medieval and Renaissance period was ransacked for new subject matter and for literary genres that has fallen into disuse. ठीक है, आगे बेटा आप ये पढ़ लीजिएगा। फिर उसके अंदर ये इस तरह की 18th सेंचुरी में हीरोइक कॉपलेट था। ठीक है, ये तो हमें पता ही था। हीरोइक कॉपलेट जिसको हम राइमिक कॉपलेट भी कहते हैं, यानी कि जिसमें दोनों वर्सेस की सेम राइम्स होती हैं। रिप्लेस बाय वेराइटी ऑफ फॉर्म्स एज बैलेड हो गए, फिर मेट्रिकल रोमांसेस हो गए, सोनेट आ गई, और ओटावा नीना आ गया, ब्लैंक वर्स यानी कि जिनकी राइमिक स्कीम नहीं मिलती, और फिर स्पेंसेरियन स्टेंजास आ गए, ऑल ऑफ विच वर फॉर्म दैट दे हैड बीन नेग्लेक्टेड सिंस रेनेसेंस टाइम। ठीक, अब ये आगे बेटा ये सारा आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके पास पेपर में तो आना नहीं है। मेन अब आते हैं हम सेलियंट फीचर्स ऑफ जॉन कीट्स पोइट्री की तरफ। अच्छा जी, अब